and service sectors are increasing gradually in Pakistan, and it's a good sign for our country. So we have a trainer today from banking sector of Pakistan. Please welcome with a huge round of applause Mr. Faisal Malik to share his journey towards continuous improvement. How's everybody doing? First of all, thank you, Shoaib Saab and the rest of the organizers for inviting me to this occasion. And देखिए संडे को सुबह सुबह सूट करा के आपने पोडियम के सामने खड़ा कर दिया, तो अगर कोई सही तरीके से डिलीवरी ना हो सके तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ, लेकिन it's good to see so many people who are available on a Sunday morning to listen to some of the boring topics that we talk about almost every day. But I'll try to make it interesting. So I'll start with a very brief introduction of mine, and then how we are deploying lean methodologies and how we are introducing lean methodologies in banking sector, especially HBL. So मैं पहले अपना तारुफ करा दूँ. I'm working as Executive Vice President, General Manager for Enterprise Process Transformation with HBL Bank, and I've been with the bank for the last 8 years now in various areas. I am primarily an engineer, so अगर ज़्यादातर आप में से लोग engineers हैं, तो you can relate to me, I can relate to all of you. I'm a mechanical engineer by education. मैंने bachelor's भी किया था, master's भी mechanical में किया था, और फिर MBA भी कर लिया था, और छोटी मोटी चीज़ें और भी की हुई हैं. So that's my educational background. I have almost 20 years of experience in various segments, primarily in the financial sector. अब आपको वो भी एक हैरत होती है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इंजीनियर हो या तुम बैंक में क्या कर रहे हो, या इंजीनियर हो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कर रहे थे. So I just want to give you one update. If you're an engineer, you can actually go and work anywhere. In fact, if you have basic common sense, if you have basic IQ, you can go and work anywhere. Degrees, whether you're an engineer, you're a business graduate, or any other graduate, really doesn't matter. As long as आपके पास basic हो, जिस किसी भी industry के अंदर जाने के लिए graduation हो. So that's the history and background of myself, and I'd like to come to the topic. देखें, मुझे जो topic दिया गया था कि lean methodologies in banking sector. तो बैंकिंग सेक्टर में लीन मेथोडोलॉजीज कैसे इस्तेमाल होती हैं, तो इंस्टेड ऑफ मुझे ये भी चॉइस दी गई थी कि मैं कोई पावर पॉइंट वगैरह लेकर आऊँ और यहाँ पे दिखाऊँ और आप लोगों को मज़ीद बोल दो पावर पॉइंट से. So I thought it's better to have a candid discussion and have your feedback also. I have, I think, 30 minutes session available, जिसमें से मैं 5 मिनट तो ज़ाया कर चुका हूँ, बट 25 मिनट रह गए मेरे पास. 25 मिनट में मैं आपसे बात भी करूँगा. अगर आपके कोई सवाल हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ उसी में दे दीजिएगा या पूछ लीजिएगा. How does the journey of lean transformation or applying lean methodologies in an organization like a bank start? So I'm going to give you practical notes कि ये होता कैसे है और ये होगा कैसे, मतलब किसी भी organization के अंदर आप किसी उसको implement कैसे कर सकते हैं. It actually starts from the top. टॉप से मुराद ये है कि आपके सीईओ से भी नहीं. It actually starts from your shareholders, your board. When they realize and when they have this vision कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जितना मर्जी हम कहें बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, वर्ल्ड क्लास, बेस्ट इन द इंडस्ट्री, but there is always room for improvement. We always get myopic about our own systems. Somebody else come and tell us कि आप में क्या क्या खराबी हैं. So it actually starts from the top. So the realization at the board level that आपकी processes ठीक नहीं है, archaic हैं, इसको fix करें, you go and simplify those. That's where the whole journey starts. That gets translated to your executive team through your chief executive. That this is our strategy. So it has to become part of your strategy to ensure that you want to bring any lean transformation into an organization. So number one, ज़रूरी है buy-in from the shareholders, and then making it or embedding it as a strategic initiative into your operating plan. So
शेयर होल्डर्स हो गए, इसलिए हो गए, फिर वहाँ से बात शुरू होती है कि ठीक है अब ये हमारा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बंद हो गया है, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, एग्जीक्यूशन का क्या किसको कहाँ फिट इन करना है, किधर नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम लेके चलें। सो एक और चीज़ जो हमारी लर्निंग है वो ये है कि देखें लीन ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ वन फंक्शन, इट हैज़ टू बी अक्रॉस द बोर्ड, it has to touch upon all the facets of the organization, all the touch points, everybody, customer related हो, non-customer related हो, business related हो, non-business related हो, हर चीज़ को touch upon करना है. So we decided that we will park this whole thing, initiative in a unit where it touches everyone. And it is, in our organization, that was corporate strategy. Because corporate strategy, one looks after the strategic initiatives of the bank and is touching upon everything and everybody across the organization. It is not the ownership of technology, it is not the ownership of operations only, it is not the ownership of business only, and it is certainly not the ownership of any digital per se function within the institution only. It is the ownership of the entire organization. So it has to be placed in a function which touches upon all the touch points. Then the stage comes where you start forming the team. कि अभी team कैसे बनेगी? Who will start this process? So depending upon your organization, the size of the organization, you need to find people who are the catalysts for bringing any change in the organization. This is a strategic initiative. It has to be delivered. It needs to be communicated, and then you have to find the relevant team members to ensure that you have the right tools and the manpower or the I should not be using the word manpower, the human power to ensure that this is executed properly. So in our case, fortunately or unfortunately, it came to my lap, and then I was given this opportunity to start the transformation, the lean transformation and process simplification in the bank. Now, when we say process simplification, it means any and all sorts of process simplification. Can be like मैंने कहा आपसे शुरू में कि कस्टमर फेसिंग भी हो सकते हैं, नॉन कस्टमर फेसिंग भी हो सकते हैं. हमारा यूजली फोकस होता है कि हम जब भी क्वालिटी की बात करते हैं और मैं सर्विस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, वो हम ज़्यादातर कस्टमर को सामने रखते हैं, which is very important. Everything needs to be customer focused, but our customers are not just external customers. Our customers are also internal customers. With a bank like HBL, we have almost 16,000, 17,000 people working across the organization. One function is exchanging information with the other function. एक process दूसरे को hand off करा रहा है, इतने multiple hands off हो रहे होते हैं. So these are our internal customers also. So हमने कहा internal processes को भी हमें ठीक करना है और external processes को भी ठीक करना है. Because the more we focus on internal processes, the more we generate time, the more we generate efficiency in our front offices to help our customers or service our customers better. So it is very important, critically important to keep that balance कि आपने internal और external customers पे बिल्कुल focus करना है. इसके लिए लोग किस किस्म के दरकार होंगे? We will need people with I'm an engineer background. दो मैंने कभी hardcore engineering नहीं की है, but पढ़ाई की भी थी. So थोड़ा बहुत idea था. बट उसके बाद हमने कुछ इंजीनियर्स अपनी टीम के अंदर रखे जो प्योर इंजीनियर्स थे, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं किया. We got people with design thinking background. This is another area that we are touching upon, which is design thinking, very effective. कि जो एक डिजाइनर का पर्सपेक्टिव होता है to solve any problem, we incorporated that into our day-to-day operations. So we got some people with some design background. We got people from some anthropology background. I don't know whether you understand this or not, but we're talking about people's emotion, how to study the emotions of the people, of the customer. उसको focus रखने के लिए, the soft side of it. It's very important. बिल्कुल ये ना engineering से related, ना किसी चीज़ से related. We're talking about human psychology over here. Those background. We got people from banking, hardcore banking background, because obviously हम industry banking के अंदर है, तो हमें अपने process समझने के लिए भी ज़रूरत होगी. इस किस्म के लोगों को हमने साथ इकट्ठा करके टीम्स बनाते हैं. And then the next challenge was जब टीम इकट्ठी हो गई, कुछ थोड़ी बहुत हो गई, कुछ होने वाली है. The next challenge is
in any organization generally, and हमें भी face हुआ, where do we start? I mean, एक organization 70 साल से काम कर रही है, 50 साल से काम कर रही है, 20 साल से काम कर रही है, so start कहाँ से करें? किसी भी मतलब जगह में हाथ जाके हाथ डालते हैं, वहाँ से process उठाने शुरू करते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है, or you actually know that what is your main pain point and then we work towards it. The first thing is the inventory of the processes in your organization, the inventory of your operating procedures in any organization. And bank by cards somehow हमारे पास होते हैं, तो जो पहली inventory उठाई तो उसमें कोई 1000-1500 के करीब हमें processes मिले कि ये हैं. अब उसमें कोई prioritization तो होती नहीं है कि कहाँ से शुरू करें. Where do we start? Day one. Where do we start? So you have to develop a sort of a prioritization matrix, a criteria to filter any process. So what those criteria are? I mean, those criteria will depend, change, will vary from industry to industry. But mostly these criteria are how complex that process is, how many handoffs are taking place there, how much important it is for your external customers, यानी कि क्या से direct customer impact है या internal customers जो हैं आपके वो ज़्यादा impact हो रहे हैं. What is the saving, proposed saving or the cost that is being incurred in actually running that process? So many signatures required, so many papers required, so many handoffs required, so many screening technology inputs required, etc., etc. What is the amount of effort, in your opinion, needed to change that process? Will it take us 6 months to revamp a process, or will it take us 6 days to reconstruct or redesign the process? Because अगर आपने क्विक जर्नी करनी है, तेज अपनी डिलीवरी दिखानी है, और आपने कोई ऐसा प्रोसेस उठा लिया जिसको करते करते आपको 6 साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, तो वो हो तो जाएगा लेकिन वो एक होगा, और जब भी होगा बड़ा होगा, लेकिन उस दौरान you're missing out the small छोटी छोटी खुशियां जो हैं वो आप मिस कर देंगे. So that again depends on your criteria. So we decided that we will not go into long-term things. We will not go into grand plans. कि ये टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क चेंज कर दें और नया सिस्टम लेकर आ जाएं और लोगों को नए लोग हायर कर लें. इस किस्म के हमने 36,000 फीट वाले जो ऊपर से देखे जाते हैं प्रोसेस को हाथ नहीं लगाएं, because this is for us low-go area. So we ended up with a list of 200 to 250 processes which we thought are what we can start. And वहाँ पे हमने अपनी टीम्स के अंदर प्रोसेस को डिवाइड करके we started working on those. So the first thing, as a principle of any lean methodology, was to find out wastages. What are the sort of मुख्तलिफ techniques आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिज़ाइन है. So you can use any methodology you like to do it. But हमारी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर और आजकल बड़ी in भी है design thinking, so that is primarily used. So we do ideation sessions. We sit down with different teams. We put spots together. Agile methodology के through हम उसको execute भी कराते हैं, and then we find out what are the wastages. No biasness, nothing. What are the wastages? And since we have people from anthropology background, and the human centricity is always there. चाहे हमारे internal customer हो या external customer हो. So human centricity को सामने रख के अपने customer को सामने रखकर then we redesign the whole journey. मैं आपको एक example देता हूँ कि जिस दिन हम पहले दिन आए, तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहला प्रोसेस था वो हमने क्या पिक किया, which was very close to some of our senior management also, कि यार अभी तक हम लोग ठप्पे क्यों लगा रहे होते हैं कागजात पे, सबकी स्टैम्प्स लग रही होती हैं, why? I mean when we have emails, सारे tools हैं, emails हैं, digital systems हैं, टेक्नोलॉजी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये अभी तक स्टैम्प्स, फिजिकल स्टैम्प्स क्यों लग रहे हैं? So we decided, and I'm talking about not just internal documents, हमारे external documents, यानी customer के जो account opening forms होते हैं उस पे, अब just imagine कि एक branch में एक stamp लगी, हमने उसको process को hard code कर दिया था पहले कि stamp लगी होनी चाहिए, और वो जब scrutiny के लिए, because these are critical accounts that we open, we have to go through a lot of compliance checks to
ग्लोबल स्क्रीनिंग्स होती हैं। तो जी जो उसको वेरीफाई कर रहा है, स्क्रूटनाइज करेगा, वो देखेगा उसमें स्टैम्प लगी भी नहीं लगी। अच्छा, जो उसने स्टैम्प लगाई है उसका सिग्नेचर भी उसको हुआ नहीं हुआ, और अगर स्टैम्प सही नजर नहीं आ रही है, स्कैन ठीक नहीं हुई, कॉपी ठीक नहीं हुई, लोगों तक पहुंची नहीं सही, टेढ़ी हो गई, रिजेक्टेड। The whole cycle, the customer is either waiting in the branch or somewhere else, and then the whole cycle restarts. And this is wasted of time. So we thought, eliminate the steps. Now we work backwards, and whenever you're bringing in change, you have to face a lot of resistance by the status quo and people who've been practicing it for one way or the other for ages. उनकी आदत हो गई है ना इस टाइम नहीं सर इसमें तो। अच्छा वो ज़्यादा वो जो थे ना जिसको कहते हैं बोल्ड वॉल में लिखें, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, कि देखिए ये स्टैम्प नहीं लगेगा तो हमारे तो क़यामत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस माइंडसेट को चेंज करना, इसको कंटिन्यूसली चेंज कराते रहना परसेवरेंस के साथ, दैट इज आवर रोल also, and this is the role of any change manager or any lean transformation manager in any industry. That's what we do. And when we say that this is the process, this is the go-to process, that becomes the law. That becomes the go-to process. You all have to conform to it. And then they are trained also, the people are trained as well. So मैंने कहा ये पहला process हमने उठाया, तो इससे पूरी organization के अंदर एक, और हमने कहा कि एक हफ्ते का नोटिस है, एक हफ्ते के अंदर no more stamps will be accepted. So आपने टेढ़ी लगानी लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई रिजेक्शन नहीं होगी, उस पर कोई आपकी कंप्लायंस का मसला नहीं होगा। अगर लगा रहे हैं आते हैं चेंज होती हैं, तो एटलीस्ट वी हैड कट डाउन द एंटायर wastages that was happening in the organization. So you pick up the process, you roll it out, your first few processes or your initial processes or initial projects needs to be one which creates that impression. This is now, and I'm talking about enterprise-wide, चाहे अपने छोटे से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या across the industry के लिए काम कर रहे हो, make big goals which become example and give you the perspective that you mean business. So that is very critically important. Now the last 2 points. I hope somebody is keeping a track on time. अगर मैं बिल्कुल for all मुझे बता दीजिएगा please. Communication. How you communicate any change. And all these things I'm talking about practically. ठीक है, जो हम कर रहे हैं, इदारों में कर रहे होते हैं, आप भी कर ही रहे होंगे. It is very important to make your communication according to your target market. So when you change something, you communicate across the bank. This is what we have done. Simple. अंग्रेजी में, उर्दू में, जिस ज़बान में भी आपने करना है, आसान तरीन अल्फाज में आपको बताना है लोगों को, ना सिर्फ उन लोगों को जो कि उस प्रोसेस से रिलेटेड है या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बट अगर आपका एक एंटरप्राइज वाइड एजेंडा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताना है, रोज बताना है। जब भी आप कोई नई चेंज लेकर आए, छोटी या बड़ी, कम्युनिकेट करें लोगों को, प्रॉपरली कम्युनिकेट करें और बार बार करें, ताकि ये इम्बेड हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोगों के अंदर, कि द चेंज प्रोसेस इज ऑन, पीपल आर वर्किंग ऑन इट एंड चेंजिंग इट। जब कम्युनिकेट कर देते हैं आप, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके लिए भी आसानी होती है, यू नो एग्जैक्टली आपने कितनी चीज़ें कंप्लीट की, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का एक रिकॉर्ड आ जाता है कि हम इम्प्रूवमेंट क्या लाएंगे। बट आपने कम्युनिकेट करना क्या है? आसान तो है चीज़, जिसको भी कम्युनिकेट करना है उसको आसान बना कर कम्युनिकेट करना है, बट यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट यू हैव चेंज्ड एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट चेंज, व्हाट आर योर डिजायर्ड इम्पैक्ट्स ऑफ दैट चेंज। क्या इससे जो काम आप कर रहे थे पहले, वो अब इतने मैन आवर्स आपको सेव कर देगा? क्या आप जो ये पहले काम कर रहे थे उसमें अगर 10 हैंड ऑफ्स होते थे, अब उसकी जगह 2 होंगे? क्या ये जो आप पहले काम कर रहे थे उसमें 10 लोग इन्वॉल्व होते थे, अब क्या ये बॉट चलाएगा पीछे? अगर हमने एक टूल जैसे रेपिटेटिव प्रोसेस ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं रोबोटिक्स के, वो डाले हुए हैं, तो क्या वो एलिमिनेट कर देगा आपके काम को? आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ से वेरीफाई करें, बटन दबाएं, बाकी काम पीछे खुद ही होंगे। सो ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी टीम के अंदर वो थिंग दैट वर्क वेल, बिकॉज आई हैव वर्क इन द बिजनेस ऑल्सो, जब भी हम बैक ऑफिस के और इस किस्म के कामों को हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
टीम्स जो है ना एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जो टीम आपकी चेंज टीम है, ट्रांसफॉर्मेशन टीम है, उसकी डिलीवरी कैसे मेजर होगी? उसकी डिलीवरी मेजर होगी कि उसने कितने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए और डिलीवर किए और इम्प्लीमेंट कराए इदारे के अंदर। सो उसको हम मेजर करने के लिए हम बाकायदा एक सेल्स मॉडल की तरह काम करते हैं। तो जो हमने स्क्वाड्स बनाई हुई हैं अपने प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनके टारगेट्स हैं कि आपने हर हफ्ते हमें एक्स डिलीवरी देनी, आपने हर महीने आपने इतनी डिलीवरी देनी, and I keep stock of it, and then that information comes to me on a weekly basis, on a monthly basis, which I discuss with my team the way are we on it. So just to give you an example, in an organization like HPL, which is a huge organization, and anything that we do, small or big, हमारी को 1700 तो ब्रांचें हैं, और जितने ब्रांचों में लोग हैं उतने ही हमारे ऑफ ब्रांच में लोग हैं। तो कोई भी छोटी सी भी कोई चेंज करनी होती है तो वो अक्सर जो है 70 to 80% हमारे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टच करती है। कोई एक छोटी सी चेंज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस साइज इज नॉट दैट इजी। सो in just about what 8 months, 7-8 months, we were able to close almost 150 processes across the bank, implemented, change 150 processes। मैंने आपको शुरू में डेटा बताया था कि हमारी यूनिवर्स कितनी थी, वो 1200 की थी, जिसमें से हमने 250 के करीब उठाए थे। उसका 50% ऑलमोस्ट हम कर चुके पहले 7-8 महीने में। एंड नाउ ये तो वो थे ना जो डॉक्यूमेंटेड थे। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके पास डेली आते हैं। So this transformation, these lean methodologies team, they are actually the problem solving teams. Where you give them any problem and they'll solve it. Either using Six Sigma, either using any lean methodologies, TQM, sometimes, mostly we use design thinking in our case, because we are a bank. कुछ हम Six Sigma की कभी कभार techniques we used to कर लेते हैं, but mostly we use design thinking. And at the end of the day, my conclusion is, having understood all of these terminologies and fancy certifications and everything, it only boils down to pure common sense. I mean, you don't need to be a rocket scientist to identify कि यार problem क्या है और इसका solution क्या होगा। एक basic common sense अगर आप लोगों के अंदर है और एक discipline है, so all these techniques what they are doing is just giving you a discipline to come to the right solution quickly. That discipline is critically important. In the end, last thing, you communicate, you measure you go and measure, reassess. The change that you brought about, is it giving you the desired result or not? So how do you measure it? अगर मैं एक ट्रेडिशनल मैनेजर हूँ या काम कर रहा हूँ तो और ये किसी एक फंक्शन के अंदर हो, मैं कहूँगा सर मेजर में मैं खुद ही करूँगा जाके। 1700 ब्रांचें हैं हमारी, इतनी लोकेशंस हैं, कहाँ जाऊँगा, कितना देर एक प्रोसेस को भी 1700 जगह जाके चेक करूँगा तो या सैम्पल बेसिस भी करूँगा तो it will take us a lot of time. Then we start finding collaborating partners. So you have to find collaboration partners to go and reassess the changes that you've made. In a bank like ours, who are those partners? We have people like audit, we have people like controls, we have people like service quality. These are the people who are going already and ensuring कि क्या हम हमसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। So उनके साथ collaborate करें और उनके मैट्रिक्स के अंदर इन चीज़ों को एम्बेड करा दें कि यार ये 10 प्रोसेसेस हमने इस महीने जो हैं 10 प्रोसेसेस हमने चेंज किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं और इसका ये रिजल्ट आना चाहिए था। Please go and verify whether one, are they being practiced or not? Are people going back to the old practices? Number two, are they giving the desired result or not? So that's the feedback that you keep getting it. And then test them, test the people. Keep testing them, their knowledge base. उसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट HR का एक फंक्शन है जो कि ई-लर्निंग के थ्रू लोगों को टेस्ट करता है कि क्या आपको ये चीज़ों के बारे में पता है नहीं पता, टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है साथ। But that's good. We got a very good result in our feedback almost. अगर मैं इसको इस तरह से यूनिट में समझा सकूं कि जो भी मैं प्रोसेसेस चेंज किए, ट्रांसफॉर्मेशन की, almost every branch in our organization, on an average, knows 70 to 75% of the processes that they have changed.
Why? Because we were following that discipline. Communicate effectively, keep communicating it, show them results, do some hand holding, test them. So all these things worked out, और इस बड़ी organization के अंदर छोटे time के अंदर हमने वो desired results, objectives अपने. It's not, still not the way we want it to be. We want it to be close to 90%, but it's a journey. We have to go through it slowly and gradually. And the last thing is once you measure something, you think something is not working right, you redesign it. You go back on the drawing board and refix it, or keep assessing it for further improvements. Now what is happening is whatever we have developed last year, 30 to 40% उसके updates आ रहे हैं. Because एक दफा अगर आपने process को improve कर दिया, तो वो कोई, forever के लिए नहीं है. It's not perennial. It has to die. It has to get old. The practice needs to get updated sooner or frequently. So we are not in that phase where we actually, whatever we fixed, we are now bringing those updates, version 2s, updates, बेहतर करना उसको, या उसको totally scrap कर देना. कुछ एक दो process ऐसे भी थे जो हमने कहा नहीं यार, they didn't work out. Let's go back to our original state. It was better. So these are the things that work. So in the end, that's how we implement all these lean methodologies and process changes in the organization. Since I will not be able to continue for the rest of the day, but अगर आप में से, or I don't know what the format is, but if anybody has a question or anything to say or ask, most welcome to do so now. I'm happy to answer. So I hope I'm not changing any format of your plan. Anybody can ask the question. If not, you can all reach out to me on my LinkedIn profile or through website. So thank you so much, everybody, for your time, and I hope I was able to communicate something to this cause today. Thank you.